Hey students, good day to you all. I hope all of you are doing great. In this video, we'll study lesson number 1 of the third unit of English Bal Bharti of standard 6th. It is a poetry. The name of the poetry is It Can Be Done. Okay children, open your English textbook to page 49. Once again, I'll read out the name of the poem. It Can Be Done. I'll first recite the poem and then we'll together understand it stanza wise. Let's begin. The man who misses all the fun is he who says it can't be done. In solemn pride, he stands aloof and greets each venture with reproof. Had he the power, he would efface the history of the human race. We would have no radio or motor cars, no streets lit by electric stars. No telegraph nor telephone would linger in the age of stone. The world would sleep if things were run by men who say it can't be done. Anonymous. अब हम इस पोएम को स्टैंजा वाइज डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं. द फर्स्ट स्टैंजा सेज द मैन हु मिसेस ऑल द फन इज ही हु सेज इट कांट बी डन. So the poet begins the poem by telling about the man. First of all, you have to understand that the word man does not refer to only the male gender. वो इन जनरली पर्सन को रिफर कर रहा है, इसलिए he has used the word man. Now which person, which man? The person who says it can't be done. For example, understanding a subject, let's take maths. So we get to hear from most of the students that maths is so difficult and I cannot do it. I don't understand the concept. So students, what happens? That particular student or the group of students, they miss the fun of learning new things and misses the enjoyment of trying to learn the concept with beautiful examples. We all know that learning is fun. And अगर हम कोई भी चीज़ या टास्क को नहीं सीखेंगे and उसे I can't do it ऐसे बोलकर लीव कर देंगे, then we are actually missing the fun of doing that particular task. So we must always try to give an attempt to every task that comes our way and we should enjoy the process. Okay? The second stanza. In solemn pride, he stands aloof and greets each venture with reproof. In solemn pride, what does it mean? Find the meaning below the poem, students. Here, in this poem, it means looking very serious, grand and important. तो poet second stanza में बोल रहा है that the man who misses the fun by always saying that it cannot be done, you will always find him proudly explaining to you about the task कि वो ये नहीं करेगा क्योंकि ये उससे होने वाला नहीं है. So why should he waste his time doing that? He stands aloof. What does it mean? Separately without getting involved in anything. ये उसका मीनिंग है. तो वो पर्सन गिवन टास्क में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा एंड वो सीधा बोल देगा लाइक आई सेड कि ये होने वाला नहीं है मुझसे. सो वाई शुड आई इवन ट्राई इट सिंस आई नो दैट आई कैन नॉट डू इट. इंस्टेड ऑफ गिविंग एन अटेम्प्ट ही विल गिव सेवरल रीजंस कि उससे होने वाला नहीं है. तो वो उसे क्यों करेगा, वो उसका टाइम वेस्ट क्यों करेगा. एंड ग्रीट्स ईच वेंचर विथ रिप्रूफ. नाउ व्हाट इज वेंचर? यू हैव हर्ड एडवेंचर. So it is a dangerous or risky task, a risky or daring journey. And what is reproof? It is criticism and negative comments. So whenever the person gets any risky task or something that is much different from what is normal, then instead of trying it out, वो person हमेशा negative comments करेगा. ये कैसा टास्क है यार, ऐसा टास्क कोई देता है क्या, ऐसा टास्क होता भी है क्या, मैं तो नहीं करने वाला हूँ, ये इतना डिफिकल्ट है, ये मुझसे नहीं होगा, I cannot do it, etc. etc. Okay? The third stanza. Had he the power, he would efface the history of the human race. So, if the person had the power, he would have wiped out the whole history. Efface means wipe out. So, वो person पूरी history ही wipe कर देता. Means पूरी humans का development जो अब तक का हुआ है, तो ऐसा person कभी होने ही नहीं देता ये सब. Since he would have thought it to be a difficult task and would have said a big no to all of it. Fourth stanza. We would have no radio or motor cars, no streets lit by electric stars. आज हमारे पास ना ही रेडियो होता, ना मोबाइल फ़ोन होता, ना ही व्हीकल्स होती, ना ही स्ट्रीट लाइट्स होती. इलेक्ट्रिक स्टार्स वो किसको बोल रहा है? स्ट्रीट लाइट्स को बोल रहा है. तो विदाउट इन्वेंशंस हमारे पास आज कुछ होता ही नहीं. एंड वी वुड हैव लिव्ड द लाइफ दैट द पीपल इन द पास्ट यूज्ड टू लिव. हम लोग आज भी पास्ट में ही घूम रहे होते. अगर ये डेवलपमेंट वो बंदे के हाथ में होता तो वो हमेशा नो बोल करके हम आज पुराने ज़माने लोगों की ज़िंदगी जी रहे होते. फिफ्थ स्टैंजा. नो टेलीग्राफ नॉट टेलीफोन, वी वुड लिंगर इन द एज ऑफ स्टोन.
we wouldn't have telegraph for sending messages, nor we would have telephones today to connect with our dear ones. And हम लोग अभी तक स्टोन एज में ही लिंगर कर रहे होते. What does linger means? To stay longer than required at a place. तो एक जगह पे वक्त से ज़्यादा रुकने को लिंगर बोलते हैं. तो हम अभी भी वही लाइफ जी रहे होते अगर स्टोन एज मैन कुछ डेवलपमेंट ही नहीं करता. स्टोन एज मैन डेवलपमेंट करते करते धीरे धीरे वो टास्क को अटेम्प्ट करते करते आज हम मॉडर्न एरा में आ चुके हैं जहाँ पे हमें बहुत सारी सहूलतें हैं. तो आज अगर वो बंदा स्टोन एज मैन से बोलता कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हम कर ही नहीं सकते, तो आज हम स्टोन एज लाइफ ही जी रहे होते. ओके, 6th stanza and the last one. The world would sleep if things were run by men who say it can't be done. If the men, which men? The men who says it can't be done. If they are given the power to run the world, तो बच्चों अब तक का तो आप समझ ही गए होंगे कि दुनिया का क्या होता अगर उन्हें पावर दे दिया जाता दुनिया चलाने के लिए. तो कोई भी कुछ भी नहीं करता, बट they would have just waste that time giving silly reasons for not doing anything, and they would have sit idle and relaxed instead of doing something meaningful. Okay? सो इन शॉर्ट बच्चों, इट कैन बी डन पोएम हमें क्या सीख दे रही है? वो ये सीख दे रही है कि अ मैन ही कैन डू एनी वर्क बाय वर्च्यू ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड परसिवियरेंस. अगर वो हार्ड वर्क करता है और अपने दिल से पूरे काम करता है कि उसे ये चीज़ चाहिए ही, तो वो चीज़ उसे मिल ही जाती है. हार्ड वर्क ज़रूरी है और वो चीज़ की चाहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एनीथिंग अ मैन वॉन्ट्स, जो भी वो इंसान चीज़ चाहता है तो वो उसकी एम्बिशन बन जाती है. तो जब वो एम्बिशन को रात और दिन एक करके उसे चाहने की कोशिश करता है, उसे पाने की कोशिश करता है, हार्ड वर्क करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि पहले अटैम्प्ट में, दूसरे अटैम्प्ट में नहीं, तीसरे अटैम्प्ट में तो वो ज़रूर व ज़रूर सक्सेस हासिल कर ही लेता है. जैसे आप कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ को तो जानते होंगे, बिल गेट्स है, चार्ली चैपलिन, स्टीव जॉब्स, अब्राहम लिंकन, मार्क ज़करबर्ग. तो इन लोगों ने पहली अटैम्प्ट में सक्सेस नहीं हासिल किए, इन लोग ने ट्राई करते गए, पहला फेलियर आया, इन लोग दोबारा से ट्राई किए. आई होप ये पोएम आपको बहुत बड़ी सीख दी होगी कि लाइफ में जो भी दिक्कतें आती हैं आपको उसे किस तरह से सामना करना है. दैट इफ़ यू कम अक्रॉस एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उसे कभी भी बिग नो नहीं बोलना है, उसे कभी भी नो बोल करके हटा नहीं देना है. वो प्रोसेस को एंजॉय करो. क्या पता आपको सक्सेस मिल जाए, नहीं मिले तो कम से कम आपको ये तो रहेगा कि आपने वो टास्क को अटेम्प्ट किए और आपको थोड़ा सी वो प्रोसेस एंजॉय करने का मौका मिला और थोड़ा सी आपको उस पर एक्सपीरियंस मिला, ताकि वो थोड़ा एक्सपीरियंस जो आपने गेन किए वो दोबारा से लगाएंगे तो आप शायद से सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में आप सक्सेस हासिल ही कर लो. तो कभी भी जो भी डिफ़िकल्ट टास्क आता है आप कभी भी उसे नो मत बोलो, उसे अटेम्प्ट दो, 1 या 2 अटेम्प्ट दो, 3 या 4 अटेम्प्ट दो, वो ज़रूर ब ज़रूर होगा ही. तो आपकी स्टडीज़ है, आपके सब्जेक्ट्स है, मैथ्स है, साइंस है, अगर एक बार में समझ नहीं आ रहे तो 2 से 3 बार ट्राई कीजिए, उसे बार बार वो सम्स को सॉल्व कीजिए. ज़रूरी नहीं है कि पहले दूसरे अटेम्प्ट में आपको आ ही जाए सम, तो आप ट्राई करते रहिए. ठीक है बच्चों? Now students, to see how much you have understood the poetry, I have posted a link in the description box to a small test. All you have to do is to click the link in the description box. You will be directed to the test wherein you will be having 10 MCQs, attempt those MCQs and see how much marks you have scored. Put your score in the comment section. I'll randomly pick a student who scores full marks and give him or her a shout out in my next video. In the next video, we'll study the second lesson, chapter 3.2, 7 Sisters. To get notified about my next video, subscribe and click the bell icon. Also like this video if it was really helpful for you to understand it, and share it with your school friends or tuition friends. With this, I'll end my video. Stay safe and continue learning with Sheikh Academy. See ya.